ठीक है, बात क्या करने जा रहे हैं? बात ये करने जा रहे हैं कि क्या वो सर्कमस्टेंसेस हैं जब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया स्टेट लिस्ट के आइटम्स पे लॉ मेकिंग करता है। तो देयर आर 5 कंडीशंस, 5 सिचुएशंस in which parliament is authorized to make laws on state list items. Okay. So number 1 is Article 249. Under Article 249, it is provided that if such situation arises that Rajya Sabha passes a resolution that it is important for parliament to make law for on state list items. So Rajya Sabha, but this Rajya Sabha resolution has to be passed with a special majority of 2/3, not less than 2/3 actually, or more. So this is Article 249. Article 249, Rajya Sabha passes a resolution for Parliament to make law on a state list item, for Parliament to make law on a state list item. But this resolution has to be passed with not less than with a special majority of not less than 2/3. ठीक है, चलिए दूसरी बात जो है ये होगी, राज्यसभा पासेस रेजोल्यूशन विद स्पेशल मेजॉरिटी नॉट लेस देन 2/3. ठीक है, तो 2/3 की मेजॉरिटी, 2/3 या उससे ज़्यादा की मेजॉरिटी होगी और राज्यसभा रेजोल्यूशन पास करता है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट, मतलब ऐसी सिचुएशन आ गई है कि पार्लियामेंट को स्टेट लिस्ट के आइटम पे लॉ बनाना होगा। तो ये पावर कहाँ से मिलती है, ये सिचुएशन कहाँ से मिलती है? आर्टिकल 249। ऐसी सिचुएशन आती है तो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल कहता है कि ये कर सकते हैं? आर्टिकल 249 कहता है। अच्छा, एक और बात है कि ऐसा होने से एक चीज़ इस्टेब्लिश होती है कि देर आर सच सिचुएशंस इन विच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिहेव्स लाइक एन यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन. दिस इज़ जस्ट वन ऑफ सच सिनेरियोज. ओके, नंबर 2 इज़ डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी. ओके, सो इफ़ देयर इज डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी कब डिक्लेयर होती है, क्या सिचुएशन होती है? जब आर्म्ड रेबेलियन हो रहा होता है, एक्सटर्नल एग्रेशन होता है, तो ये सिचुएशन होती है डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी की. तो अगर नेशनल इमरजेंसी है तो इस सिचुएशन में पार्लियामेंट कैन मेक लॉ फॉर होल ऑफ इंडिया. सो दैट इंक्लूड्स स्टेट लिस्ट आइटम्स. सो दैट इज एन सेकेंड कंडीशन इन विच पार्लियामेंट विल मेक लॉ ऑन स्टेट लिस्ट आइटम. ओके, तो क्या कंडीशन होती है ये देख लो आप, 1-2 कंडीशन इसमें कि एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन. Okay, now the third condition comes to or more state request parliament. So there is a situation, there can be a situation where two neighboring states, or maybe not neighboring, there are certain situations, maybe some conflict is there, maybe certain trade matters are there, it can be anything. So अंडर दिस कंडीशन, इस सिचुएशन में 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स, 2 और मोर स्टेट्स रिक्वेस्ट पार्लियामेंट, मेक अ रिक्वेस्ट टू द पार्लियामेंट कि बेटर ये होगा कि इस स्टेट लिस्ट आइटम पे आप लॉ बना दीजिए. तो इन दैट कंडीशन 2 और मोर स्टेट्स रिक्वेस्ट पार्लियामेंट टू मेक लॉ ऑन टू मेक लॉ ऑन स्टेट list items. So this is third condition. First condition 249, Rajya Sabha resolution with a special majority of not less than 2/3. Article 250, declaration of national emergency is in place. In that condition, Parliament can make law for whole or any part of India. And Article 252, that is the third condition, where in this 2 or more states request Parliament to make laws on a state list subject, on a state list item. So there are 3 lists.
union list, state list and concurrent list. You already know about that. Okay, now the fourth condition comes in this government of India is in some agreement with a foreign country, or there is an international treaty or agreement. To honor that agreement or treaty, if Parliament needs to make a law on a state list item, then Parliament has the authority to do so. So this is international treaty and agreement for honoring this. International treaty or agreement, Parliament can make law on state list item. Okay, this is the fourth condition. Now there is fifth and last, that is state emergency or president's rule. Okay, when the state emergency is implemented, then both the legislative and executive powers of the state are suspended. Executive powers are suspended definitely. Legislation is also not in place during the period of state emergency or president's rule. So in that case, Parliament is authorized to make law for the state. Definitely it will be on a state list items, and most common instance for this is during a president's rule in some state, or during state emergency, Parliament passing budget for the particular state. That is a very common example. So state emergency, president's rule, both legislative and executive powers are suspended. So definitely legislation will also take place by Parliament. Okay, example, instance, state budget in Union Parliament. Okay, so these are the 5 articles that give certain situations in which Parliament can make law on an state list item, and all these scenarios actually empower the Parliament to make law on a state list item and project the Constitution of India as behaving like unitary constitution. Thank you.